So till that time we have completed unit 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4 and 5. Now time for unit number 6. So in this unit we will discuss contingent contract, quasi contract and their legal rules. But before starting the topic contingent contract, I think we should go for a fast track revision of remedies for breach of contract, that is unit number 5. First remedy we have discussed in the last class is rescission of the contract, means termination or end of the contract by promisee when promiser refuses to perform. If in the contract one party refuses to perform, the other party also may cancel the contract. It means rescission of contract. Suit for damages. Suit for damages means monetary compensation. Means monetary compensation. Compensation paid to recover the loss. Kinds of damages. Ordinary damages means actual losses. Whatever the actual loss to the promisee, promiser is liable to pay for breach of contract, but not for indirect loss. Special damages which are decided at the time of contract. Exemplary damages granted only in case of breach of contract of marriage and unjustified dishonor of the check. Nominal damages where there is no loss, they are granted just to calm the ego of the person who filed the case. Damages for inconvenience, damage for duration of delay, liquidated damage and penalty. Liquidated damages means damages equals to justified estimation of loss. Penalty when damages are unreasonable, compensation is unreasonable, it is penalty, and court may grant the relief against the penalty. Suit for specific performance. When damages are not an adequate remedy, damages means monetary compensation is not an adequate remedy, the court may direct the party in the breach to carry out his promise according to the terms of contract. Specific suit for specific performance is not granted where is not can be filed where damages, that is monetary compensation is adequate relief. Contract are of personal nature when personal skills are required. Not possible for the court to supervise the performance. The contract is made by company beyond its object as laid down in its memorandum of association. Suit for quantum merit. Quantum merit means as much as earned. जितना काम हो गया उतने का payment. When a person has done some work under a contract and the other party repudiated the contract. Repudiated means cancel the contract, or some event happens which makes the further performance of contract impossible, then the party who has performed the work can claim the remuneration for the work that is already done by him. Suit for injunction, that is stay order. You can say the stay order of the court, where party does something which he promised not to do, and then he is doing. The other party can take the stay order from the court for prohibiting him from doing the act which is decided in the contract not to do that. Please read this slide. क्लास अवेलेबल ऑन जूम, यस क्लास अवेलेबल है, जूम पे चल रही है इस समय. ओके, so now the time to discuss unit number 6,
topic is contingent contract and quasi contract. So up to break, we will discuss contingent contract, your queries on the contingent contract, question answer and contingent contract. Then in the next half of the session, we will discuss the quasi contract. So get ready for the quasi contingent contract. Contingent contract are the contract. Normally, the law says a contract may be absolute or contingent. An absolute contract is that in which the promiser undertakes to perform without any condition, without any happening of event. But when the contract is dependent upon the happening of an event, happening or non-happening of an event, then it is contingent contract. Please read once again what I'm saying. A contract may be absolute or contingent. Absolute contract means promiser undertakes to perform the contract in any event without any condition. It means absolute contract means the contract in which there is no condition and promiser has to perform in any event, right? But if a contract to do or not to do something, contract may be to do or not do something, if some event collateral means secondary, main thing is something different. A contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. A contract to do कुछ करने के लिए, not to do नहीं करने के लिए, एक some event collateral मतलब secondary है, deciding factor नहीं है, consideration नहीं है. Collateral event means that event is not the consideration, not the object. The contract is something else, but event is just a condition to such contract does or does not happen. For example, if we have discussed in the unit number 4, A and B enters into a contract. A and B enters into a contract that A will give 100 rupees to B if it rains on Monday, and B will give A rupees 100 if it not rains on Monday. So in this case, the event is deciding factor. It is the wagering contract. But if contract is like that, A and B enters into a contract, A and B enters into a contract by which A will sell the umbrellas to B. A will sell the umbrellas to B if it rains on Monday. A contract was entered between A and B by which A will sell the umbrellas to B if it rains on Monday. So in this contract, the original contract is for selling of umbrella, but depends upon the happening of non-happening of event, that is rains on Monday. So this type of contract is called contingent contract. So in this contract, rain is not the consideration, not the object, just a event. Main contract is for sale of umbrella. So this contract is called contingent contract, not the wagering contract. Contract of insurance are of that class. Contract of insurance are also the wagering, are not wagering. They are also the contingent contract in the nature because in the contract of insurance, both parties, insurance company and the person who takes the insurance, insurance company and person taking the insurance have same interest that person taking the insurance should not be died, should not be. इंश्योरेंस के केस में हालांकि डिपेंड करता है, पेमेंट पे ही डिपेंड करता है कि भैया ये मर जाएगा तो पेमेंट दिया जाएगा, बट क्या इंटरेस्ट दोनों का सेम है. इन वेजरिंग द इंटरेस्ट वर डिफरेंट फॉर बोथ द पार्टीज, बट इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इंटरेस्ट इज सेम. ना तो इंश्योरेंस कंपनी चाहती है वो आदमी मर जाए, पैसा देना पड़ेगा, ना वो आदमी खुद चाहता है मैं मर जाऊं, राइट. So insurance contracts are also the case of
are case of contingent contract, not the wagering. A contract to pay B rupees 1 lakh if B's house is destroyed by fire. Same like compensating nature. कि अगर आपका घर 1 लाख घर जल जाता है तो मैं 1 लाख पे करूंगा. दिस इज द केस ऑफ contingent contract. Please read, students, please read this slide, giving you 30 seconds. In the previous slide, we have discussed the topic collateral event. I told you collateral event means a secondary part of the contract, not the main part. The law says an event which is neither a performance directly promised as a part of the contract nor the whole consideration for a promise. Means कि इवेंट जो एक इवेंट है जो ना तो परफॉर्मेंस है, डायरेक्ट परफॉर्मेंस है, ना कंसिडरेशन है. Event which is neither a performance, it means that is not a performance nor a whole consideration. So it is secondary event, collateral event. A contract to pay B rupees 1 lakh if B's house is burned. This is contingent contract. Here the burning of B's house is neither performance promised as a part of the contract nor it is consideration obtained from B. The liability of A arises only happening of collateral event. So what is the saying? What he is saying in this line here? The burning of a B's house is neither a performance promise as a part of the contract, nor it is consideration obtained from B. Means if it was mentioned that you burn the house, I will give you 1,000. That is not a such type of contract. कि आप घर जला दो मैं आपको 1 लाख दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. Contract is that if the house is burned by fire, then I will pay you rupees 1 lakh for the purpose of compensation to save you from the loss. So this type of contract, like insurance contract, are called contingent contract. Please read once again the collateral event. पढ़िए बच्चों एक बार ध्यान से. आराम easily. So what we have discussed, I'm coming again in the previous slide. Contingent contract may be absolute or contingent. Absolute contract means parties has to perform at any event without any condition. But in case of contingent contract section 31, please read the definition carefully. I am again requesting everyone, please read the definition which is given in section 31. Please बहुत ध्यान से पढ़िए. A contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. Contract may be for doing something, not to do something, but depend upon the happening or does not happening of an event. The contract of insurance is the type of contingent contract. Collateral event, the event which is neither directly performance nor directly the consideration. A contract to pay rupees 1 lakh if B's house is burned, it is a contingent nature, it is not a wagering nature. Because burning of house is neither a performance promise as a part of the contract nor it is consideration obtained from B. Right? Essentials of a contingent contract. A 4-mark question can be drafted in your exam on this topic. What are the essentials? What do you mean by the contingent contract and what are the essentials? The essentials of a contingent contract, the performance of a contingent contract
depend upon the happening or non-happening of some event or condition. Performance of contingent contract depends upon happening or non-happening of some event or condition. If it is not mentioned that the performance is dependent upon the happening or non-happening of event, then it is not contingent contract, then it is absolute contract. The event on which the performance is made to depend is an event collateral to the contract. Collateral, secondary part, not the main contract. Suppose suppose A agrees to deliver 100 bags of wheat and B agrees to pay the price only afterwards. This is the conditional contract, not the contingent. What is decided in between A and B? That A will sell the 100 bags of wheat. B will make the payment only after delivery. So this is not conditional. This is not the event, because event on which B's obligation is made to depend is part of the promise itself, not a collateral event. Because it is not an event. It may be possible, not possible. No. Condition, I will deliver you the wheat, then you will make the payment. This is the condition, not the event. Please read these point 1 and 2, giving you the 30 seconds. Please read कीजिए इसको. Clear? One more example. Similarly, where A promises to pay B rupees 1 lakh if he marries C, it is not a contingent. ये contingent नहीं है कि भैया where A promise to pay 1000 he marries C, ये event हो. तो आप शादी, तो ये एक डायरेक्ट इवेंट, इट इज नॉट अ कोलेटरल इवेंट, इट इज अ डायरेक्ट इवेंट. भाई शादी करोगे हम आपको 1 लाख रुपए देंगे. So this is not an contingent contract. Please read example 3 and 4 carefully. The contingent event should not be mere will of promiser, mere desire of the promiser, mere the intention of the promiser. A promises to pay B rupees 10,000 if A left Delhi for Bombay on particular day. It is a contingent contract because going to Bombay is an event, no doubt, within A's will, but is not merely his will. Means the deciding factor whether A will leave for the Bombay or not is depend upon the nature of work. If he has work, he has any reason to leave for Bombay, leave from Delhi to Bombay, then he will go. This is not the event. So A promises to pay B rupees 10,000 if A left for Delhi for Bombay on particular day. It is a contingent contract because going to Bombay is an event, no doubt, within A's will, but it is not merely his will. The event must be uncertain. The event must be uncertain. If event is certain or bound to happen, the contract is due to be performed, then it is not a contingent contract. See example number 6. A agrees to sell his agricultural land to B after obtaining the necessary permission from the collector. Important example. A agrees to sell land to B after obtaining necessary permission from the collector. So what is decided between A and B? That A will sell his agricultural land to B, but after taking NOC, no objection certificate, from the collector. So collector has no right to restrict the sale of land. He may apply the formalities to be completed. Some formalities from the law for the government to be completed, and after the completion of the formalities required as per the law for sale of land, then nobody has any right
to restrict the sale of land. So in this case, A has just to take the permissions from the collector by furnishing some documents as required by the law, then the permission will be granted. So this is not a contingent. So A agreed to sell his land to B after obtaining necessary permission from the collector. As a matter of course, the permission was generally granted on the fulfillment of certain formalities. It was held that the contract was not a contingent contract, as per the grant of permission by collector was almost a certainty. You complete the documentation part, then you will get the permission for sale of land. Please read example number 6. Please read, giving you 1 minute. Please read all the 4 points, important part for your exam. Now the rules to enforcement, relating to enforcement. One thing you should note for these rules, these rules are from section 32 to section 36. But please listen, everyone. I am requesting you, please concentrate on my words. I will explain in English and also repeat in Hindi. I am not giving anything new in Hindi. I will just repeat my concept, what I've given, I will give you in English, in Hindi. So please don't be bothered, sir. This say please give the in English, please give answer हिंदी में बताओ. ध्यान से सुनिए. ये जो रूल्स हैं, रूल 6 रूल हैं, 5 रूल्स हैं, सॉरी 5 रूल सेक्शन 32 सेक्शन 35. मैं पूरा इंग्लिश में समझाऊंगा, देन हिंदी में उसको रिपीट करूंगा. ठीक है ना. इन रूल्स पर कहीं कुछ करना, आप प्लीज नोट कर लीजिएगा. कोई नई चीज ना तो इंग्लिश में होगी ना हिंदी में होगी. नो न्यू थिंग इन इंग्लिश और हिंदी. आई जस्ट विल मेक द ट्रांसलेशन. ओके, इंपॉर्टेंट है. सो आई एम अगेन रिपीटिंग द इन हिंदी ऑल्सो. If a contract, please listen, first rule, section 32. If a contract dependent upon the happening of an event, if a contract dependent upon the happening of an event can be enforced only if the event happens. But if the happening become impossible, the contract will be void. If a contract is dependent upon the happening of an event can be enforced only if the event happens. But if the happening of an event become impossible, such contract will be void. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी घटना के होने पर डिपेंड करता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी घटना के होने पर डिपेंड करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त एनफोर्स किया जा सकता है, उसी समय फोर्स किया जा सकता है जब वो घटना हो जाती है. अगर उस घटना का होना इम्पॉसिबल हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी घटना के होने पे डिपेंड करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त एनफोर्स किया जा सकता है जब वो घटना हो जाती है. अगर उस घटना का होना इम्पॉसिबल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. If a contract dependent upon the happening of an event, then contract can be enforced only if the event happens. If the happening of an event become impossible, the contract will be.
See example number 7. X entered into a contract with Y to purchase Y's buffalo if X survives Z. X survives Z means Z dies before X. Z dies in the lifetime of X. So X entered into a contract with Y to purchase Y's buffalo if X survives Z. In view of the said principle of law, the contract in the instant case could not be enforced by law unless and until Z dies during the lifetime of X. X कॉन्ट्रैक्ट में आया Y के, क्या किस कॉन्ट्रैक्ट में की Y की बफेलो, Y की भैंस खरीदेगा अगर X Z से ज्यादा जिएगा। इसका मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स होगा, जब जेड की डेथ हो जाएगी एक्स की लाइफ टाइम। लेकिन अगर एक्स की डेथ पहले हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड। अनदर एग्जांपल, अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी। अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी, सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, द कॉन्ट्रैक्ट इज impossible to perform and hence becomes void. So you can note down also, if a contract, section 32 says, if a contract is dependent upon the happening of an event, can be enforced only if the event happens, and if the happening become impossible, the contract become void. Please read this slide. You can make the note of this slide. I'm just giving the 30 seconds. Please fast कीजिए. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है किसी घटना के होने पर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है ओनली उस वक्त जिस वक्त वो घटना हो जाती है, और घटना का होना अगर इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। जस्ट रिवर्स ऑफ सेक्शन 32. In section 32, the contract in section 32, the contract was dependent upon the happening of an event. But in section 33, listen everyone, in section 33, a contract is based on the non-happening of an event. So if a contract is dependent upon the non-happening of an event, if a contract is dependent upon non-happening of an event, can be enforced only if the happening of the event become impossible. If a contract is dependent upon the non-happening of an event, can be enforced only if the happening of an event become impossible. But if event happens, the contract will be void. If event happens, the contract will be void. Contract will be void. So if a contract is dependent upon non-happening of an event, can be enforced only if the happening of that event become impossible. But if event happens, the contract will be void. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है किसी घटना के नहीं होने पर, तो कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त क्लेम किया जा सकता है, उसी वक्त एनफोर्स किया जा सकता है जब वो घटना का होना इम्पॉसिबल हो जाए, और अगर वो घटना हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए। If a contract dependent upon the non-happening of an event, can be enforced only if the happening of the event becomes impossible. But if the event happens, the contract will be void.
See example number 9. P agreed to pay Q a sum of money if a certain ship does not return. What is decided in the contract? A agreed to pay Q a sum of money if certain ship does not return. The ship was sunk. The ship was sunk. डूब गया. The contract could be enforced as the ship would never return in the circumstance. So P agreed to pay Q a sum of money if certain ship does not return. The ship was sunk. The contract could be enforced as the ship would never return in the circumstances. If ship returns, the contract will be void. कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था जो डिपेंड करता था, कोई कॉन्ट्रैक्ट था जो डिपेंड कर रहा था किसी घटना के नहीं होने पर. क्या घटना थी? शिप का डूबना. अगर शिप नहीं आएगा तो ये हम परफॉर्म करेंगे. अब अगर शिप डूब जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है, पर लेकिन अगर शिप आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. सो व्हाट आई हैव डिस्कस, वी हैव डिस्कस सेक्शन 32 एंड 33. व्हाट इज 32? कॉन्ट्रैक्ट is dependent upon the happening of an event. Section 33, contract dependent upon the non-happening of an event. So question in 32, if a contract is dependent upon the happening of an event can be enforced only if the event happens, but if the happening become impossible, contract will be void. 33 provides, if a contract dependent upon the non-happening of an event can be enforced only if the happening of the event become impossible. If event happens, the contract will be void. 34 after 35. First we go for 35, then we will come on the 34. 35 first part. First part of 35. This is the first part. If a contract is dependent upon the happening of an event within the specified time. Actually, up to this line, this was 32. But in 34, 35, time limit is also added. Time limit is also added. In 32, it was mentioned the contract is dependent upon the happening of an event. But in 35, first part, it was also the time limit is also mentioned by saying that if a contract is dependent upon the happening of an event within the specified time, can be enforced. Listen, can be enforced only if the event happens within that time. If a contract is dependent upon the happening of an event within the specified time, the contract can be enforced only if the event happens within that time. If event does not happen within that time or happening become impossible within that time, the contract will be void. If a contract is dependent, contingent contract to do or not to do anything on the happening of an specified uncertain event within fixed time, will be void at the expiry of the time period, time fixed, or such event has not happened, or if before the time fixed such event become impossible. Means, repeating my words, if a contract is dependent upon the happening of an event within a specified time, can be enforced only if the event happens within that time. But if the happening of the event, if the event does not happen within that time or happening within that time become impossible, the contract will be void. एक कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है किसी घटना के होने पर विद इन स्पेसिफाइड टाइम. सपोज इन 1 month, एक महीने के अंदर. सो
If the event happens within that time, the contract can be enforced. But event does not happen within that time or happening in that time become impossible, contract will be void. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है किसी घटना के होने पर एक स्पेसिफाइड टाइम में, तो अगर वो घटना उस टाइम में हो जाएगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जाएगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एनफोर्स किया जाएगा. लेकिन अगर वो घटना उस टाइम में नहीं होती है, टाइम निकल गया या उसका होना इम्पॉसिबल हो जाए उस टाइम पीरियड में, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा. सी एग्जांपल नंबर 11. ए promises to pay B a sum of money if certain ship returns within a year. The contract may be enforced if the ship returns within that year or become void if the ship burns within that year. A ने प्रॉमिस किया कुछ ट्रांजेक्शन के लिए, if certain ship return within that year, अगर certain ship ईयर में आ जाता है, the contract may be enforced. contract enforce क्या सकता है, if ship एक साल में आ जाए तो एनफोर्स होगा, अगर एक साल में नहीं आया या एक साल से पहले डूब गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. प्लीज रीड पॉइंट नंबर 4 इन एग्जांपल 11. Gaurav Khatri is asking, sir, after condition happen, then can contingent contract become absolute contract? No. Contract, whether the contract is absolute or contingent nature, this is decided at the time of contract, at the time of making of contract, not after the happening of contract or after the happening of event. कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट है या एब्सोल्यूट है, ये उस वक्त डिसाइड होगा जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा. कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इवेंट हुई नहीं, उसके बाद कोई इससे कोई मतलब नहीं. ओके, तो सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन 35 which is connected to 33 but time limit is added based on the non-happening of an event. This is 33 but time limit add हो गई, now it is 35. So if a contract dependent upon the non-happening of an event within a specified time, a contract dependent upon non-happening of an event within a specified time, can be enforced only if the event does not happen within that time or happening become impossible. But if event happens within that time, the contract will be void. If a contract is dependent upon the non-happening of an event within a specified time, can be enforced only if event does not happen within that time or happening become impossible within that time. But if event happens within that time, the contract will be void. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है किसी घटना के नहीं होने पर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स होगा, कि जब वो घटना उस टाइम में नहीं होती है, जब वो टाइम खत्म होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा, या टाइम खत्म होने से पहले ही उस घटना का होना इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो एनफोर्सेबल हो जाएगा. बट अगर वो घटना हो जाती है उस समय के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. If a contract dependent upon the non-happening of an event, if a contract dependent upon the non-happening of an event within a specified time can be enforced only if the event does not happen within that time or happening become impossible. But if event happen within that time, the contract will be void. See example number 12. A promises to pay B a sum of money if certain ship does not return within a year. The contract may be enforced if the ship does not return within the year or is burnt or sunk within that year. कि एक ने प्रॉमिस किया बी को कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि एक शिप आ जाएगा
1 साल के नहीं आएगा तो 1 साल के अंदर तो हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे। तो अगर ये शिप नहीं आता है 1 साल तक तो ये एनफोर्सेबल हो जाएगा, या 1 साल से पहले ही शिप डूब जाता है या जल जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा। अगर वो शिप आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। प्लीज रीड पॉइंट नंबर 5, पढ़िए ध्यान से। एग्जाम्पल 8, गौरव जी। एग्जाम्पल 8 क्या था, सेक्शन 32 का पार्ट था। अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी, कि भैया हम पेमेंट करेंगे अगर बी सी से शादी कर ले, सी की डेथ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया, क्योंकि घटना होने से पहले ही उसका मतलब उस घटना का होना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। सो वी हैव डिस्कस 32, 33 एंड 35। नाउ कम टू 34। Based, if a contract based on the behavior of a person, based on the behavior of a person within the specified time, section 34. If a contract is based upon how a person will act within the specified time, how a person will act within the specified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything, when such person does anything which renders it impossible, and he should so act within the time or otherwise then under the further contingencies. तो क्या कह रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड करता है, भैया वो इस फला टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में वो इस तरह बिहेव करेगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल होगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा काम करे जो तय किया गया तो वो होना इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल 10, ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ ए मैरिज सी, सी मैरिज बी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी काम के लिए बी को कि अगर वो कब परफॉर्म होगा, जब ए सी से शादी कर ले, सी ने डी से कर ली, तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई ए से सी की शादी की। द मैरिज ऑफ ए टू सी इज नाउ टू बी कंसिडर इम्पॉसिबल ऑल्दो इट इज पॉसिबल दैट डी मे डाई एंड सी मे आफ्टरवर्ड मैरी। प्लीज रीड, प्लीज रीड। Now the last point of rules, based on the happening of an impossible event, section 36. If a contract is based on the happening of an impossible act, impossible event is void. Contingent agreement to do or not to do anything if an impossible event happens are void, whether the impossibility of an event is known or not known to the parties to the agreement at the time when it is made. We have discussed this part in unit number 4th, second day. बहुत अच्छे से पढ़ा था, याद आ जाना चाहिए अब आप लोगों को कि कॉन्ट्रैक्ट अगर डिपेंडेंट है किसी घटना के होने या नहीं होने पर और वो घटना इम्पॉसिबल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, चाहे पता हो या नहीं। Example 13, X agrees to pay Y rupees 1000 if two straight lines should enclose a space, void agreement. A agrees to pay B rupees 1000 if B marries A's daughter C. C was dead at the time of agreement, the agreement is again void. Please read, giving you 1 minute. पढ़िए ध्यान से बच्चों। Now the difference between contingent contract and badgering contract. I always say whenever you are answering the question based on the differentiation,
then please prepare one more column for basis, on which basis you are making the difference. So contingent wagering, meaning in this part you have to give the definition or concept, a contract to do or not to do something in some event, collateral to such contract does or does not happen. This is the contingent contract. Wagering, a wagering agreement is a promise to give money or money's worth upon the determination or ascertainment of the uncertain event. Uncertain event, in case of contingent, uncertain event is the collateral event, but in case of wagering agreement, uncertain event is the sole determining factor. Basic, main, only. Nature, a contingent contract may not be of a wagering nature, but a wagering is always contingent because it is dependent upon the happening or non-happening of an event. Validity, contingent contract are valid, but wagering are void. Game of chance, contingent contract is never a game of chance, but wagering is just a game of chance. Please read all the 5 points. सर चैट को अलाउ कर दीजिए, सुन पा रहे हैं मेरी बात? प्लीज चैट बॉक्स अलाउ कर दीजिए. बच्चों का क्वेरी हो तो प्लीज पूछिए, रेलेवेंट क्वेरी पूछिएगा. रिक्वेस्टिंग एवरीवन. यहां तक जो पढ़ा, एनी क्वेरी अप टू दिस पार्ट? डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूटिलिटी, ये क्या चीज है? सेक्शन 34. Section 34 was a contract which is dependent upon the behavior of a person within the specified time. कि कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है किसी पर्सन के बिहेवियर पर, कि भाई मैं आपको ये सामान बेचूंगा अगर ए ने बी से शादी कर ली, अब बी ने सी से कर ली, तो वो होना इम्पॉसिबल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. राइट. In difference between which point, Akshay, tell me please which point? Section 34. अमीशा, विष्णु, क्लियर हुआ क्या? बताया मैंने. स्टडी मॉडल प्रॉब्लम लास्ट में लेंगे बेटा, अभी नहीं. कंटिंजेंट एंड वेजरिंग, डिफरेंस में कौन सा पॉइंट आप कह रहे हो बेटा? अक्षय, ये तो बताओ आप. सेक्शन 36 से if a contract dependent upon the happening or non happening of an impossible event is always void. किसी घटना के होने पे डिपेंड करता है, जो घटना इम्पॉसिबल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, भले ही पार्टियों को पता हो या नहीं पता हो. सर बेटा पवन, इसको आप एक बार खुद पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है वो केस. एग्जाम्पल नंबर 6. अमीशा, एग्जाम्पल 6 में क्या था कि एक ए को बी, ए ने और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें ए को लैंड बेचनी थी बी को, पर उसे कुछ एनओसी लेने के मतलब परमिशन मिल जाए कलेक्टर से. तो कलेक्टर किसी लैंड को ट्रांसफर करने से बेच नहीं सकता, ये आपकी प्रॉपर्टी, आप बेच सकते हो, पर जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना. तो वही पर्पज है कि भाई आप कागज पूरे कीजिए, आपको परमिशन मिल जाएगी. तो ये ऐसी इवेंट नहीं है कि मे और मे नॉट बी हैपन, आपको कागज पूरे करने वो करने पड़ेंगे. आप 6 पॉइंट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. 6 पॉइंट 6 पॉइंट 6 पॉइंट बेटा मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो अक्षित, जब हमने यूनिट नंबर 4 का सेकंड पार्ट किया था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट करता है किसी इम्पॉसिबल इवेंट पर. तो भाई इवेंट इम्पॉसिबल है तो पता हो या नहीं पता हो, होगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा. एग्रीड. 6 पॉइंट अब क्लियर हुआ क्या? इम्पॉसिबल इवेंट बेटा अक्षित. अमीशा, एग्जाम्पल 6 मैंने ले लिया.
अक्षित एग्जाम्पल 3 में क्या था कि ए को डिलीवर करने 100 बैग गेहूं के बोरे, बी एग्रीज टू पे द प्राइस ओनली आफ्टरवर्ड्स, कि भैया पैसे जब दूंगा जब आपका माल आ जाएगा। तो ये ऐसी कोई इवेंट नहीं है, ये तो भाई नॉर्मल बात है, माल सप्लाई करोगे तो पेमेंट करेंगे, तो कंडीशनल है, इवेंट नहीं है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट बेटा मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी इन यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 3 में, एक बार उसको देखो आप, मैं बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। वेजरिंग नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, शर्त के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। विक्रम, योर क्वेरी इज वेजरिंग एंड बेटिंग सेम नेचर। अक्षित एग्जाम्पल 3 ले लिया मैंने, 8 और ले रहा हूं मैं आपका एग्जाम्पल। 8 एग्जाम्पल क्या है कि एक कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, जिसमें वो पेमेंट करेगा जब बी सी से शादी कर ले। अगर सी की डेथ हो गई तो शादी कैसे होगी, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अक्षित अब क्लियर हुआ बेटा यहां तक? बेटे ए तो 100 बैग डिलीवर करेगा तो बी को पेमेंट करना पड़ेगा, यही तो कंडीशन है कि भैया पहले आप माल दो तो मैं पेमेंट करूंगा। तो ये कोई कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंटिजेंट होता है कोई घटना हो भी सकती है, नहीं भी डिपेंडेंट, बट ये तो कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है कि भैया आप पहले माल भेजो तो मैं पेमेंट करूंगा। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट फर्स्ट मैच ऑफ एलपीएल। बोलो बच्चों, से यस और नो। विच रूल यू आर टॉकिंग अबाउट अक्षित? बेटे थर्ड सिक्स भी मैंने, आई हैव रिपीटेड 6 3 और 4 टाइम्स इवन आफ्टर इन द क्वेरी सेशन। प्लीज आप ध्यान से सुनो बेटा मेरी बात को। 6 बताया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है किसी इम्पॉसिबल इवेंट पर, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। थर्ड में क्या था, किसी घटना के, डिपेंड करता है किसी घटना के होने पर विद इन स्पेसिफाइड टाइम। वो था किसी इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड करता है विद इन स्पेसिफाइड टाइम। तो अगर वो उस तरह बिहेव करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा। एनफोर्समेंट मतलब क्लेम करना, राइट? प्लीज कम टू दिस पॉइंट। 6 में इम्पॉसिबल इवेंट है क्या बेटा? पढ़ो तो सही, इतनी बार मैंने समझाया बोला है, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से। 6 पॉइंट इज इवेंट डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट लिखा हुआ है, मैंने 6 बार रिपीट किया बेटा। A contract of insurance is contract of guarantee, contingent contract, wagering, unilateral agreement. A contingent contract. Please read this question carefully. Tricky question. A contract to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. A contract not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. A contract to do or not do something if some event collateral to such contract does or does not happen. A contract to do or not do something if some event collateral to such contract does not happen. बेटा अक्षित प्लीज फर्स्ट यू रीड द प्रोविजंस। मुझे लगता है अभी आपने प्रोविजंस ना पढ़े ना आपने मेरी बात सुनी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा पहले वो प्रोविजन रीड कीजिए प्रॉपर। आपने लिखा है कंटिजेंट ऑन हैपनिंग इज विद इन फिक्स टाइम वॉइड। नहीं बेटा, पूरा कंसेप्ट पढ़िए, ध्यान से पढ़ो इस बार पूरा। आपने अधूरा पार्ट पढ़ा है, उसका पूरा पार्ट पढ़िए। A contingent contract is always void, become void when event becomes impossible, is voidable, never becomes void.
is game of chance, conditional contract, contingent contract, wagering agreement, quasi contract. In a specified uncertainty event happens in fix is void. I am trying to नहीं, फिर गलत है आपका क्वेश्चन, फिर गलत है। ये आपने जो लाइन लिखी है वो भी क्लियर नहीं है। आप लिख रहे हैं इन ए स्पेसिफाइड अनसर्टेनिटी इवेंट हैपेंस। नहीं बेटा, ये लाइन ही गलत है। आप पहले क्लियर करो, आप पूछना क्या है। आप पहले प्रोविजंस पढ़ो, फिर डिसाइड करो कि क्वेरी क्या है। कॉन्ट्रैक्ट आर एनफोर्सेबल बाय फ्यूचर इवेंट, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बेटा अक्षित, मैंने अभी आपको बोला, आप प्लीज मेरी बात लिखिए, नोट कीजिए कि जब स्टडी मॉड्यूल में आपको लास्ट में अलाउ करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूँ। जब आप पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम है स्टडी मॉड्यूल की, तब जब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, तब डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट आर एनफोर्सेबल बाय फ्यूचर इवेंट, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वैजरिंग एग्रीमेंट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। A agrees to pay rupees 10,000 to B if a certain ship returns within a year. The ship sinks within the year. In this case, the contract becomes valid, void, voidable, illegal. First question, a contract of insurance is contract of contingent contract. Contingent contract, contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. A contingent contract is always void, becomes void when event becomes impossible, is voidable, never void. Wagering agreement is a game of chance. Contingent contracts enforceable by future events. A agrees to pay B rupees, A agrees to pay rupees 10,000 to B if certain ship returns within a year. The ship sinks within the year. In this case, the contract becomes void. Let's see. फोर्थ समझ में नहीं आया। फोर्थ पॉइंट में लिखा तो है बेटा, क्लियर वेजरिंग एग्रीमेंट होता है। जब हमने डिफरेंस पढ़ा था अभी कॉन्टिंजेंट और वेजरिंग का, तो उसमें लास्ट पॉइंट था कि वेजरिंग एग्रीमेंट गेम ऑफ चांस। फर्स्ट पर्सन हु हैज गिवन द करेक्ट आंसर इज मिस्टर विष्णु, मिस्टर समर्थ, इकरा, दक्षता, विक्रम।
So at this place, we are having a break of 5 minutes. सर ब्रेक दे दिए बच्चों को 5 मिनट का. Okay, sir. Break Thank starts. you.
एग्जाम 5 नंबर समझ नहीं आया अमीशा? अमीशा बेटा सिंपल देखिए, यू when the question is of MCQ, multiple choice question, then you have to select the best. So in this case, the best option is contingent contract, which are enforceable. Claim किया सकता हूँ future event, right? Rules का fourth point, Akshit, can you tell me what is the point number 2? Please mention chat box, Akshit. Till that time, I'm starting the quasi contract. Quasi contract basically not actually entered. Not actually entered. एक्चुअल में एंटर नहीं होते, एक्चुअल में एंटर नहीं होते, बट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस द लाइबिलिटीज आर अराइज इन दीज कॉन्ट्रैक्ट. सी, लेट्स टेक एन एग्जांपल. A enters into contract with B. Akshit, I am very much clear what we want to ask, but I am asking you, please tell me whether, please tell me what is rule number 1, rule number 2, in fact. Then I will discuss rule number 1, what was the rule number 1 and what was the rule number 2. Please write down, not the copy paste, what you are understanding, rule number 1 or rule number 2. Then I will link the rule number 4 and 5. So please mention that. Till that time I will not take your queries. आप please कीजिए, then I will reply you. बाकी बच्चों से पूरा लिखिए बेटा. ये तो आपने हेडिंग लिख दिया, आप उसका मतलब क्या था वो आप मुझे लिख के भेजिए क्लियर अपने शब्दों में. जब तक मैं बच्चों ही ले रहा हूं, उसके बाद जब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, देन आई विल टेक योर क्वेरीज. ओके, सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मींस the contract which are not actually entered. I am taking the example, a contract was entered by A and B, by which A will supply 100 kg of rice to Mr. A. A contract was entered between A and B by which B will supply 100 kg of rice. We will supply 100 kg of rice to Mr. A. But what actually happened? Let's say the contract was entered on 1st January 2026. Next day, on 2nd January 2026, the agent of the B, who has the duty to supply, deliver the goods, wrongly delivered the goods to C. Wrongly delivered the goods to C. Now, and C taken the goods as its own. एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ 1 जनवरी को A और B के बीच में, by which B A को सप्लाई करेगा 100 किलो चावल. B के एजेंट ने गलती से वो 100 किलो चावल C को डिलीवर कर दिए. C को डिलीवर कर दिए. ठीक है. Now question arises, who is liable to make the payment? Make the payment. Contract was entered between A and B, but performed between B and C. कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ ए और बी के बीच में, बट परफॉर्म हुआ बी और सी के बीच में. When B asked the payment from A, when B asked the payment from A, when B asked the payment from A, then A replied, "Sir, I don't receive any delivery of the goods. I didn't receive any delivery of the goods.
So I am not liable to make the payment. B asked C for payment. B ने C से कहा भैया तुम पेमेंट करो. C ने कहा, but C replied there was no contact between between me and you. Then why should I make the payment? तो A ने कहा भैया मेरे से माल नहीं मिला. C ने कहा मुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ था, तो मैं क्यों पेमेंट करूं? तो एज पर you students tell me who should be liable to make the payment. B will refund the money. B को पैसा मिला नहीं है भैया, मेल लेना है. The actual is who has get the benefit should be liable to make the payment. So this type of contract that is between B and C, because of the circumstances, the contract between B and C is called quasi contract. Quasi contract are based on principle of equity, justice and good conscience. सबको व्यवहारिकता होनी चाहिए, एक जो न्यायिक रूप से होना चाहिए, उसके बेसिस पर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को नाम दिया गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. द मेन रीजन टू डिफाइन द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज दैट द no man should get rich. No man should get rich on the cost of other. किसी के दूसरे नुकसान पर एक आदमी पैसे वाला नहीं होना चाहिए. So this type of contracts are called quasi contract. Under certain special circumstances, the law creates and enforces legal rights and obligation, although the parties have never entered into a contract. Such obligation imposed by law are called quasi contract. Law ने create किया, the created by law, and actually the parties never entered into a contract. Never. Such obligations imposed by law are called quasi contract. Quasi contract are based on the principle of equity, justice and good conscience. A quasi or constructive contract rests upon the maxim no man must grow rich out of another person. Please read. अभी क्लियर हुआ क्या ये कंसेप्ट? Here A can get compensation for B not receiving the goods by B if A suffers some loss. Deepak is asking, sir, here A can get compensation for not receiving goods by B. Yes, if A suffers some loss. यूनिट 1 में भी था, बिल्कुल था, बट बेसिक कंसेप्ट था. जब व्हेन आई वाज टीचिंग यूनिट 1, आई टोल्ड यू कि देन वी विल डिस्कस डिटेल in unit number 6. Quasi, sir, Gaurav saying, sir, it means quasi contract is not contract, just right and obligation by law. Yes, Peter. Okay, clear? Take the example. T, a tradesman, leaves goods at C's house by mistake. C treats the goods as his own. C is bound to pay for the goods. T, a businessman, wrongly or by mistake dropped the goods, delivered the goods at C house by mistake, and C has taken as its own. Now C is liable to make the payment, and the relationship between T and C is called quasi contract. Relationship between T and C is called quasi contract. Example number 16. A pays some money to B by mistake. गलती से पैसे दे दिए. It is really due to C. B must refund the money to, right? Yes, Akshit.
Example 17, a fruit parcel is delivered under a mistake to R, who consumed the fruit thinking them as birthday present. R must return the parcel or pay for the fruits. Although there is no agreement between R and the true owner, yet he is bound to pay as the law regards his quasi contracts. I request everyone to please read example 15, 16, 17 once again. एग्जाम्पल 7 सिंपल सा फंडा है। एक फ्रूट का पार्सल गलती से आर के पास चला गया, आर ने वो फ्रूट्स खा लिए समझ के कि उसका बर्थडे प्रेजेंट है, तो पेमेंट कौन करेगा? आर करेगा। बस सिंपल सा फंडा है। सर इफ वी रिटर्न दैट गुड्स दैट वी गेट बाय मिस्टेक, यस। आगे गौरव, कंप्लीट योर क्वेरी बेटा। नाउ द टाइप्स ऑफ Sir, do law consider people to be rational every time? Not so. Depend upon the situation. Sir, आपने Gaurav is saying, sir, if we return the good that we get by mistake, then we have to pay. How is possible? अगर गलती से कोई आपको कुछ दे गया और आपने वापस कर दिया, तो फिर आपको लगता है पेमेंट करोगे गौरव? आपको लगता है पेमेंट करोगे? आई डोंट थिंक आप पेमेंट करोगे, राइट? लॉजिकल क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्लेम। सर चैट बॉक्स अब डिसेबल कर दीजिए, कंसेप्ट के बाद डिस्कस करेंगे। सर सुन पा रहे हैं मेरी बात? तब टेक्निकल सपोर्ट प्लीज इसको चैट बॉक्स को डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में क्वेरी लेंगे अपन, ठीक है सर? क्लेम्स फॉर नेसेसिटीज सप्लाइड टू ए पर्सन incompetent to contract. Claims for necessities supplied to a person incompetent. Remember incompetent, lunatic, or you can say unsound mind. So law says in case any necessaries supplied, law says any necessaries supplied to a unsound mind, then his property is liable to for the payment. Property, estate. A supplies B a lunatic with necessaries suitable to his condition in life. Necessary, remember necessaries? Roti, kapda, makan, shiksha, food, cloth, shelter, education. A supplies B a lunatic with necessaries suitable to his condition in life. A is entitled to be reimbursed from B's property. Following points should be noted. The goods supplied must be necessaries. It is only the property, whether movable or immovable, of incapable person that shall be liable. Means goods should be necessaries, not the luxuries, and only the property. Suppose the necessaries supplied for 10,000 rupees to a lunatic person and his property is value of 8,000, then he is liable to make only the payment of only 8,000. Okay, so please read this point. Please read this point.
right to recover money paid for another person. Paid for another person. It means one person has paid money for another person. Another person is liable, so he has made the payment on his behalf, but it is for specific conditions. Listen, a person who has paid a sum of money which another is obliged to pay, it's a duty of another person to pay, is entitled to be reimbursed that other person provided the payment has been made by him to protect his own interest. कह रहा है कि अगर एक पर्सन पेमेंट कर रहा है, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, देयर टू पर ए इज द टेनेंट, बी इज द लैंडलॉर्ड. A is the tenant, B is the landlord. B has to make the payment of electricity bill. But B does not make the payment. The problem is that the electricity department says to A, because A was living in the you can say the flat of B. Say if the bill is not paid by evening today, the connection will be discharged and there you will not have the electricity. A है, B के घर पे किराए पे रह रहा था, बिजली का बिल B को पे करना था क्योंकि ओनर है B ने पेमेंट नहीं किया. बिजली वाले आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले A के पास आते हैं, कहते हैं भाई साहब पेमेंट नहीं हुआ, शाम तक बिजली काट देंगे हम. अब प्रॉब्लम A को भी हो जाएगी, तो A ने क्या किया, क्योंकि A का खुद का इंटरेस्ट था, तो उसने पेमेंट कर दिया B के बिहाफ पर, जबकि B ने नहीं काटा. The payment of the electricity bill of B's house is made by the A because A was living as a tenant in that house. B never informed or never permitted A for making the payment. So, but in this case, A can claim the payment of electricity bill from B because in that payment, A was also interested. See example number 19. X holds a land in Rajasthan on a lease granted by Y, the Jamindar. The land revenue due on Y being in area to the government advertised by the government for sale. Under the land revenue laws, such sale will be the annulment of X lease. X, to prevent the sale and consequent annulment of his own lease, pays the government the sum due from Y. Y is bound to make goods to the X the amount so paid. What is the example? Mr. X holds a land in Rajasthan, which is taken from Mr. Y. The land revenue, Lagan, land revenue was area, unpaid. The government made the advertisement that because the land revenue on this land is unpaid, the land is going for auction, land is going for sale. And after the sale, the X lease will be cancelled. Annulment means termination. And so X, to prevent the sale and consequent annulment of his own lease, paid the government sum due from Y. And Y is now bound to make the goods to X the amount so paid. X के पास एक लैंड थी राजस्थान में, Y जमींदार से ली थी, जिसपे लैंड रेवेन्यू, जो लैंड का टैक्स होता है, वो नहीं दिया गया. गवर्नमेंट ने अखबार में एड निकाल दिया कि भैया इस क्योंकि ये टैक्स बहुत पेंडिंग है, लगान बहुत पेंडिंग है, तो हम इसको सेल कर रहे हैं, तो उस सेल करके हम लैंड रेवेन्यू रिकवर करेंगे. अगर ये लैंड सेल हो जाती तो जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कैंसिल हो जाता, यानी एक्स को वो लैंड खाली करनी पड़ती. तो उसने इस लीज को बचाने के लिए उस लैंड रेवेन्यू को पे कर दिया, जबकि वाई ने से नहीं कहा था, क्योंकि एक्स खुद इंटरेस्टेड था उस लैंड में. तो यहां पर लॉ कहता है कि इस पेमेंट को जो एक्स ने किया है वाई के बिहाफ पर,
XY से क्लेम कर सकता है. Please read once again. If anything is paid on behalf of another in which the person is also interested, he can claim from other person. And this is again the type of quasi contract. Please read. Please read. Next point. Obligations of person enjoying benefits of non-gratuitous act. Non-gratuitous का मतलब होता है without consideration and non-gratuitous का मतलब हुआ for consideration. Something which is not free. Something which is not free. कुछ ऐसी चीज जो फ्री ना हो उसे बोलते हैं नॉन ग्रेचुटियस. In terms of section 70 of the act, where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, not intending to do so free of cost, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to pay the compensation to the former in respect or to restore the things so done or delivered. एक आदमी लॉफुली कोई काम कर रहा है जो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर रहा है. A person is doing something lawfully and he is doing for some consideration. He is doing for some consideration and other person takes the benefit, then other person has to make the payment. I have taken the example which is in picture. A puri sabji was selling before the temple. Mr. Raj thought this is the prasad bandara, just free of cost. He has no idea that person is not giving free of cost, he is selling the product. He has taken that puri bhaji from that trader in his mind that it is free of cost, it is a prasad. When he consumes, the owner or the trader asks for the money. Then Raj said, sir, I was thinking that it is Bhandara. Mandir ke bahar khade ho Bhandara hai to. It is the Bhandara. So I am not liable to make the payment. But in this case, the law says the person who was selling the puri bhaji, whether he has any interest, any intention to give it free of cost. क्या उसकी कोई इंटेंशन थी फ्री ऑफ कॉस्ट देने की या वो किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है? द आंसर इज नो. सो इट मीन्स द पर्सन हु इज selling the puri bhaji, he is giving a non-gratuitous act. He is doing the non-gratuitous act. So it was your mistake, Mr. Raj. You have to make the payment. ये गलती राज की थी. या तो पूरी सब्जी वापस करो, आप खा चुके तो वापस तो कर नहीं सकते, तो इसका पेमेंट करो. राइट. One more example, 20. A tradesman leaves goods at B's house by mistake. B treats the goods at his own. He is bound to pay A for them. गलती से goods छोड़ दिया, payment करना पड़ेगा. I am repeating the provision point number C, section 70. In terms of the section 70 of the Act, where a person lawfully does anything for another person, delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, that is free of cost, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to pay compensation to the former in respect of or to restore the things so done or delivered. Please read them carefully.
एक बार पढ़ लीजिए बच्चों। Responsibility of finder of goods, section 71. A person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as that of bailee. Bailee means the person who receives the goods under the bailment. In unit number 8, we will have full session to discuss the bailer bailee and bailment. So what is the duties? I am just taking the basic duties for such bailee at this point of time when something is found. The finder of lost good has to take proper care of the property as a man of ordinary prudence. नॉर्मल बुद्धि का आदमी जो करता है ना केयर करने के लिए उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी प्रूडेंस. टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ प्रॉपर्टी एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, उसको यूज नहीं करना है, एंड टू रिस्टोर द गुड्स इफ ओनर इज फाउंड. अगर आपको कोई चीज पड़ी हुई मिलती है तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है? प्रॉपर केयर करना, जो आप अपने गुड्स की करते हैं. अपने लिए यूज नहीं करना है, केयर करना है, यूज नहीं करना है. और जब ओनर मिल जाए तो भैया तू अपनी चीज पकड़ वापस जाए. बट वन थिंग यू शुड नोट, in case of finding of lost good, in case of finding of lost goods, only a true owner, only a true owner can claim that good from you. अगर कोई चीज पड़ी है मिली आपको तो केवल ट्रू ओनर आपसे ले सकता है, बाकी दुनिया का कोई इंसान वो आपसे क्लेम नहीं कर सकता. If you find anything lost belonging to another, so it's your duty to take proper care, not to consume or use the goods, and to restore the goods if owner is found. But one thing you should note, it is the only true owner who can take that good from you, no one else in whole world. In whole world, only the true owner can take the good from you. See example 21. P, a customer in D's shop, put down a brooch with her coat and forgets to pick it up. One of the D's assistants found it and it was placed in a drawer over the weekend. On the Monday, it was discovered as missing. D was liable to P in view of the absence of the ordinary care which in the circumstances a prudent man would have taken. What is the case? P, a customer in D's shop. एक customer था D की shop में. Puts down a brooch with her coat and forget to pick it up. एक ब्रॉच निकाल के रख दिया उसने अपने कोट में से और वो लेना भूल गया. D's assistant, D is the owner, D's assistant found that brooch and placed in a drawer normally. Casually उसने एक ड्रॉर में रख दिया और वो पूरे वीकेंड पड़ा रहा. मंडे इट वॉज फाउंड मिसिंग. भैया आपने केयर नहीं करी. क्या आपका ब्रॉच होता तो आप ऐसे ही छोड़ देते? नहीं, केयर करते. तो इन दिस केस डी वॉज लाइबल टू पे फॉर द because he has not taken any reasonable care. So please read section 71 once again. पढ़िए ध्यान से बच्चों. Liability, last point, liability for money paid or things delivered by mistake or under coercion. गलती से या किसी डरा के धमका के, by threat, under threat. A person to whom money has been paid or thing delivered by mistake or under coercion must repay or return it. अगर गलती से कोई चीज आ गई या कोई डरा के लिया है तो वो चीज वापस करो. A and B jointly owes ₹100 to C. A alone pays the amount to C. B not knowing this fact pays ₹100 over again to C. Now C is bound to repay the amount to B.
क्या है, व्हाट एग्जांपल क्या है, ए और बी ने मिलके 100 रुपए लिए सी से, और ए ने पूरे 100 का पेमेंट कर दिया सी को, बी को पता ही नहीं था, और गलती से बी ने भी वो 100 रुपए दे दिए अगेन। तो ये सी की ड्यूटी बनती है, भैया पैसे गलती से आ गए, वापस करो। तो सी किसको वापस करेगा, जो बाद में आए। इफ सी इज बाउंड टू repay the amount to, so a person to whom money has been paid or things delivered by mistake on the portion must repay or return it. A and B jointly owes rupees 100 to C. A alone pays the amount to C, and B, not knowing this fact, pays 100 rupees over again to C. C is bound to repay the amount to, right? So सर प्लीज चैट बॉक्स को अलाउ कर दीजिए बच्चों के लिए। ओके सर। एक सेकेंड, आप एक क्वेरी लेते हैं। अक्षित सर, आपका पॉइंट नंबर 4 था, दैट इज कनेक्टेड विद रूल नंबर 1। वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल्स फॉर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम लिमिट वाज सेट, राइट? क्या टाइम लिमिट थी कि ए पॉइंट में टाइम लिमिट नहीं थी, गुड्स आएगा, ये इवेंट हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। अब क्या है कि अगर इस टाइम के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर शिप आया तो हम ये आपको माल बेच देंगे, ये पॉइंट रूल नंबर 1 था। शिप 1 महीने में आएगा तो हम ये माल बेच देंगे, ये रूल नंबर 4। क्लियर? एंड रूल नंबर 5 इज द सेम with rule number 2, but time limit is there, right? एग्जाम्पल 19 में था, क्या था 19 में कि, बेटा आपने शायद सुना नहीं मेरी बात अक्षित। एग्जाम्पल 19 में क्या था, कोई और बता सकता है मुझे? एग्जाम्पल 19 में क्या था? एनीबडी एल्स? टेलीग्राम लिंक शेयर करवा देते हैं अभी। एनीबडी एल्स? एग्जाम्पल 19 में क्या था? एक्स के पास लैंड थी जिसमें लगान, लैंड का टैक्स जमा नहीं हुआ था। गवर्नमेंट ने कहा हम सेल कर देंगे इस प्रोजेक्ट को। तो एक्स ने क्या किया, उसको बचाने के लिए टैक्स जमा कर दिया। किसके ब्याह पर? वाई के ब्याह पर। तो वाई क्या कर सकता है, एक्स क्या कर सकता है, वाई से वो रिकवर कर सकता है। एग्जाम्पल 21 में क्या था? 21 में क्या था, एक कस्टमर ने गलती से अपने कोट का ब्राउच किसी दुकान में, डी की दुकान में छोड़ दिया। डी के स्टाफ ने क्या किया, ऐसे कैजुअली ड्रॉ में डाल दिया, वो खो गया। तो डी लायबल हो जाएगा क्योंकि उसने प्रॉपर केयर नहीं की। अक्षित अब क्लियर हुआ बेटा? और कोई क्वेरी किसी की? पॉइंट्स क्लियर और नॉट? बोलो भाई। गौरव, इकरा, निखिल। टाइप्स में थर्ड पॉइंट, लास्ट 3 लाइन, एनलमेंट का मतलब होता है कैंसिल करना। कहता है कि सेल को बचाने के लिए, अपनी लीज को कैंसिल करने से बचाने के लिए उसने पेमेंट कर दिया टैक्स का, इसलिए वो क्लेम कर सकता है। वेरी गुड प्रगति। बच्चों आप लोग रेस्पॉन्ड करते रहा करो। तो 1 to 6 units are completed at this place just before I'm taking the LPL2. Very good, Dakshta. In old syllabus, when the syllabus was before the syllabus was changed, अक्षित मैंने तीनों लाइन समझा दी बेटा आपको। X to prevent the sale, sir, if the true owner is no more, who has the right to claim the lost property? The legal heir of the true owner, right?
Quasi-contractual liabilities lead to prevention of unjust enrichment, counter-offer, cross-offer, specific offer. A person who finds goods belonging to another takes them into custody subject to the same responsibility as that of bailee, true owner, thief, trespasser. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के थर्ड पॉइंट बेटा जी थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर इस थर्ड लाइन लास्ट 3 लाइन्स में क्या कहा है उसने कि अगर कोई काम आदमी कर रहा है पैसों के लिए और दूसरा आदमी से फ्री समझ रहा है तो दूसरे की गलती है, इस आदमी की गलती नहीं है। वो आदमी उस दूसरे आदमी से पैसे क्लेम कर सकता है कि एक मंदिर के बाहर भंडारा समझ रहा था जबकि वो आदमी पूरी सब्जी बेच रहा था, कचौड़ियां बेच रहा था, उसे लगा भंडारा है। तो जो समझ रहा था भंडारा उसने कचौड़ी लेके खा ली। कचौड़ी वाले ने पैसे मांगे तो कहा मैं तो समझा भंडारा है। नहीं भैया, कचौड़ी वाला पैसों में बेच रहा था, आपको पैसे देने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट अब समझ आ गया? ओके, वेरी गुड। क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल obligations arise by the principle of equity, justice and good conscience. Restitution, rescission, none of the above. Claims for necessaries of life supplied to lunatic under section 68 of the Indian Contract Act can be enforced against the lunatic personally when he ceases to be lunatic, the relative of lunatic, guardian of lunatic, lunatic's property or estate. A person enjoying the benefit of a lawful non-gratuitous act of another is not liable to compensate that other, is liable to compensate that other, has to perform same non-gratuitous act in the return, none of the above. Arises obligation where no contract is originally entered, wagering contract, contingent contract, quasi contract, none of these. चलिए शुरू करते हैं। Quasi contractual liabilities lead to prevention of unjust enrichment. Bailee, equity, justice and good conscience. Claims for necessaries, lunatics properties or estate is liable to compensate for that other. Quasi contract. Correct answer given by Mr. Vishnu, Dakshta, Ikra, Samarth, Vikram, Kunal, Mehak, Pragati, Amisha, Deepak. These were the students. चलिए, यस बेटा,
सेक्शन 68 माइनस पर भी अप्लाई हो सकता है। पढ़िए क्वेश्चन, पहले आप लोग पढ़िए। सेक्शन 72 कह रहा है, अगर कोई चीज गलती से आपके पास पहुंच गई, इफ एनीथिंग इज डिलीवर्ड बाय मिस्टेक you have to return. If anything delivered on by coercion and you are rejecting the contract, you are resigning the contract, then you have to return. ठीक है। Mr. L let out his residential house to Mr. M for rupees 50,000 per month for a period of 1 year. According to the rent agreement, electricity bill will be paid by Mr. L, but Mr. L could not pay the electricity dues up to the 5 months. Due to his financial hardship, the electricity board sent the notice of disconnection if it is not paid within a week's time. To avoid all this, Mr. M paid the electricity bill of rupees 50,000 with penalty. Later on, L refused to reimburse 50,000, argued that he has paid the bill voluntarily because of his own interest. Decide with reference to the provisions of Indian Contract Act 1872 whether Mr. M is entitled to be reimbursed or not. Very good. Very good. Everyone saying yes, so I don't think we need not to discuss in detail. Mr. M is entitled to be reimbursed of 50,000. Very good. X, a minor, was studying in MCom in a college on 1st July 2021. He took a loan of rupees 1 lakh from B for the payment of his college fees and to purchase books and agreed to repay by 31st December 2021. X possesses asset worth rupees 9 lakh. On due date, X fails to pay back the loan to Mr. to B. B now wants to recover the loan from Mr. X out of his X assets. Whether B would succeed, yes or no? बोलिए बच्चों। Yes, very good. Good Pragati, Akshay, Vikram, Gaurav, very good. Actually, something typing error, it is 10 lakh, not 1 lakh. जितनी असेट्स है उतना ही क्लेम कर सकते हैं। So now you can ask your queries. मैं unmute option के लिए अलाउ करता हूँ। इसको क्वेरी दो प्लीज, रेज योर हैंड्स। हाँ, 1 लाख टाइपिंग मिस्टेक भैया, 1 लाख में तो 1 लाख ही मिलेगा, 9 लाख के सेट से क्या मतलब है। और अगर 10 लाख का है तो 9 लाख ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम सेट 9 लाख की है। एनीवन, एनी अदर क्वेरी? Raise your hand, we can unmute, we allow the unmute option. Sir, this
Is this question also related to other essential elements of contract? Maybe. क्या लिखा है आपने? अक्षय सर, इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आपका है तो प्लीज आप कॉपी पेस्ट करके भेज रहे हैं तो आप इंस्टीट्यूट के पोर्टल पर डाल दीजिए, वहां से मैं रिप्लाई कर दूंगा। अभी इसको पढ़ना और रिप्लाई करना इज नॉट पॉसिबल। कोई पर्टिकुलर क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। सर सेक्शन 10 में अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है तो भी रिएम्बर्स करना होगा, डेफिनेटली। सर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है? मेन चीज है यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन टाइम, बिकॉज about 21 question have to be solved, have to be answered in the time of 3 hours. So please pick the question from suggested answer, model test paper, mock test paper, and then try to solve. Okay, any other query? चलिए अक्षय जी पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। अ, सर मैं स्टडी मटेरियल से पूछना चाहता हूँ। बोलिए कौन सी यूनिट? सर यूनिट नंबर 3 में एलियन एनिमी सर। एलियन एनिमी कौन होता है? दुश्मन देश का नागरिक जिससे देश की लड़ाई चल रही हो, उसके संग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। तो उसमें मुझे एक मिनट सर बता। उसमें मेरा यूनिट थर्ड तो हो चुकी थी ना शायद, आपकी कुछ रह गया उसमें? हाँ, बस ये रह गया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया था, एलियन एनिमी और ट्रेड एनिमी। यही कंफ्यूजन रह गया था इसमें यूनिट 3 में सर। एक मिनट सर मैं बता। हाँ, एलियन एनिमी मुझे समझना था आपसे इसमें। बता दिया ना मेरे बेटे, एलियन एनिमी कौन है? जो दुश्मन देश का नागरिक हो, जिसके संग देश की लड़ाई चल रही हो, उस देश के हाँ, नागरिक के संग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका है ऑलरेडी तो कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पे चला जाएगा, और अगर लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना देश के लिए खतरनाक होगा तो वो वॉइड हो जाएगा। और मुझे एक और था कंफ्यूजन इसमें, लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स में मतलब गलत चीज कुछ करते हैं, मतलब वो है कोई क्या? गलत काम करते हैं तो परसेंट लाइबल हो जाएंगे उसके लिए। सिविल रॉन्ग कोई करते हैं, हिसाब किताब गड़बड़ करते हैं तो 6% लाइबल रहेंगे। और अगर जैसे माइनर है, माइनर कुछ फॉल्सली इंड्यूस कर दिया मेजर को, और कॉन्ट्रैक्टर एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा 20,000, और एक्स ने रीपेमेंट करी, ए ने डिनाई करा। दोबारा बोलिए, और दोबारा बोलिए। ए एक माइनर है, वो फॉल्सली इंड्यूस्ड इन सेल्फ एज मेजर, ठीक फॉल्सली है, इंड्यूस and contracted with Mr. X for loan of rupees 20,000. ठीक है, When Mr. X asked for the payment, A denied to pay. He ठीक है। pleaded that he उसने झूठ will, बोला, झूठ बोल के लोन ले लिया। जो केस था उसके अकॉर्डिंग धर्मदास घोष मौर्य बीवी, उसके केस उस केस में क्या हुआ, उसने लोन ले लिया, तब भी इस पर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। और उसने plead करा he was a minor so he cannot enter into any contract. Held A cannot be held फिर भी liable झूठ बोला हो तब भी इस पर कोई लाइबिलिटी नहीं है, माइनर को पूरा for राइट। for repayment of amount. However, if he was not spent the same, he may be asked to repay it. अगर उसके पास पैसे बचे हुए हैं, लोन ले लिया, पैसे बचे हुए हैं तो वापस करने पड़ेंगे, खर्च हो गए हैं तो वापस नहीं करने पड़ेंगे। but the minor shall not be liable for any अब amount मैं which कह रहा हूँ he. बेटे, अगर मान लीजिए उसने कोई लोन लिया है झूठ बोल के, हाँ सर। झूठ बोल के कोई लोन लिया है और वो लोन का पेमेंट नहीं किया है, हाँ सर। लोन का पेमेंट नहीं, तो अगर वो पैसा बचा हुआ है उसके पास तो उसे वापस करना पड़ेगा, और अगर खर्च हो गया तो वापस नहीं करना पड़ेगा, भले तो झूठ बोला हो। ये सर समझ में आ गया। यूनिट 5 में रेमेडीज पूछना था। यूनिट 5 में, एक सेकंड बेटा, पहले मैं दो क्वेरी के जवाब दे दूं। प्रगति सर, प्रॉपर लीगल लैंग्वेज में आंसर नहीं लिखने होते हैं, लिखना है। अगर प्रॉपर लीगल लिख सकते हैं, लीगल लैंग्वेज लिख सकते हैं तो प्रॉपर लिखिए। अगर अपनी लैंग्वेज लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, लेकिन अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। सर, व्हेन आई स्टडी लॉ आई फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, देन टू रिमेम्बर।
The heading, subheading, I write them without seeing but always forget any one point. Can you suggest any way? बेटा इसके तो एक ही सजेशन है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना करोगे प्रैक्टिस सब याद रहेगा। अगर सर अगर क्वेश्चन टू में अगर एक्स के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, जिसने दिया पैसा वो भुगतेगा। अक्षत पूछो यार क्वेरी बेटा आपकी। 15 हो गया। यस सर। सर बेटा मैं पहले स्टडी मॉड्यूल में मुझे 1 मिनट दीजिए क्योंकि मेरा सिस्टम बंद हो गया है। 1 मिनट दीजिए, खुल जाए तो मैं आपको जवाब दूंगा। आगे और कोई क्वेरी हो तो पूछ लो जब तक, स्टडी के अलावा। ठीक है सर। मैं उस डिस्चार्ज यूनिट 4 में सारा क्लियर हो गया, मैंने पढ़ा था, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, क्लियर हो गया। बस डिस्चार्ज और कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा लिटिल बिट पूछो कंफ्यूजन पूछो है। पूछो पूछो, टॉपिक पूछो। अब जब तक सिस्टम ऑन हो रहा है तब तक पूछो टॉपिक। यस सर। सर मैंने उसमें 9 होते हैं मोड ऑफ डिस्चार्ज में, आपने हम्म बताया था क्लास हम्म। में। तो मुझे प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस, इसमें कंफ्यूजन हो रही है। दोबारा बोलिए। प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ये थोड़ा सा टफ लगा, ये क्या है? रेमिट मतलब डिस्काउंट दे सकता है कि भैया आपको 100 रुपए का चुकाने हैं, आप 90 दे दो। वे मतलब पूरी तरह माफ कर दिया उनने, 100% डिस्काउंट। आपने नोट नहीं किया? जो मैंने चार्ट बनवाया था वो नोट किया था आपने? हाँ 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 हाँ, तो यस सर। आपने वही रेमिशन नोवेशन रेसिशन रेमिशन ऑल्ट्रेशन मुझे याद है सर। वही मैं रेमिशन नोट। है जिसमें मतलब डिस्काउंट, और वेव मतलब 100% डिस्काउंट। और एक और था, कौन सा? ऑपरेशन। हाँ, एग्जाम्पल 45 एंड 46। किसमें? वो तो स्टडी मॉड्यूल में था सर। स्टडी मॉड्यूल में? एक सेकंड देखिए, मैं मोबाइल में चेक करता हूँ, खुल जाए तो, जब तक सिस्टम ऑन हो रहा है। यूनिट नंबर? यूनिट नंबर 4 में, लास्ट पेज में, लास्ट 2.11 में। यूनिट नंबर 4, पेज नंबर 2 पॉइंट। 1131 है सर। टू एक पॉइंट वन सेकंड, एक सेकंड बेटा जी। यूनिट नंबर 4 में पेज नंबर 2 पॉइंट वन 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 थ्री ट्रिपल वन वन है सर। ट्रिपल वन, एक मिनट। विच एग्जाम्पल? एग्जाम्पल 45 और 46 सर। 45 है, a contract to act as a theater for 6 months considering to a sum of paid in advance by B on several occasion A is too ill to act। मतलब परफॉर्म करना था, उसे एडवांस ही मिल गया लेकिन बहुत बीमार था, परफॉर्म नहीं कर सकता। इतना बीमार है, परफॉर्म नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। 46 कह रहा है, ए एग्रीज टू सेल हिज हॉर्स टू वाई फॉर 5,000 बट द हॉर्स डाइड इन एन एक्सीडेंट। कॉन्ट्रैक्ट किया घोड़े को बेचने का, लेकिन घोड़ा ही मर गया एक्सीडेंट में, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है ना? सर परफॉर्म कैसे अगर होगा? मैं ये सर, अगर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मतलब ए ने जैसे कॉन्ट्रैक्ट करा कार के साथ, और बी को अग्रीड प्राइस पे, तो ने एज कार डिलीवर होगी बी को, और बी ने पे करा अपने अग्रीड प्राइस के लिए, द कॉन्ट्रैक्ट एंड में आ जाएगा, तो अटेम्प्टेड होगा कि एक्चुअल होगा? नहीं, जब परफॉर्म कर दिया तो फिर क्या? अटेम्प्ट मतलब ऑफर किया है, अब उसने पेमेंट कर दिया तो बात ही खत्म हो गई, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। हाँ सर, तो अटेम्प्टेड में हम ये करते हैं कि मतलब सप्लाई करते हैं क्वांटिटी। अटेम्प्ट मतलब मैंने तो परफॉर्म करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि सामने वाला मना कर रहा है। और एक्चुअल में हम मतलब परफॉर्म जैसे कर देते कार हैं, पे कंप्लीट हो गया। परफॉर्म। हाँ, अब रेमेडीज सर, रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज, एक मिनट रुकिए। रेमेडीज बताइए। बताया हूँ सर। रेमेडीज, हाँ रेमेडीज में हाँ रेमेडीज में फोर्थ और फोर्थ पॉइंट सर, सूट फॉर इंजेक्शन। पेज नंबर 2.130। 130। हाँ बताइए। विच पॉइंट? सूट फॉर इंजंक्शन। ये सर, सूट फॉर इंजेक्शन में मुझे ये रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डूइंग मीनिंग पूछा, रिस्ट्रेन हिम रेस्ट्रिन फ्रॉम मतलब रोकना, रेस्ट्रिन मतलब रोकना, रेस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस नॉट टू डू, उस काम करने से रोकना जो उसने नहीं करने के लिए कहा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कॉन्टेक्ट किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ने मुझसे कहा कि आप हमारे यहाँ पढ़ाएंगे और हमारे यहाँ अलावा कहीं नहीं पढ़ाएंगे। अगर मैं कहीं और पढ़ा रहा हूँ तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा?
उसके मेरे अगेंस्ट इंजंक्शन ऑर्डर ले लेगा, स्टे ऑर्डर, ताकि मैं कहीं और ना पढ़ा सकूं, क्योंकि मैंने कॉन्टेक्ट किया था इंस्टीट्यूट से, राइट। और उसमें 14 15 तो समझ में आ गए थे, 16 नहीं समझ में आया। 16 क्या है? Partly rightfully residing contract entitled to compensation. A. A singer contract with B. The manager of a theatre to sing at his theatre for 2 nights in every week during the next 2 months, and B. Engages pay her 10,000 for each night's performance. On sixth night, A willfully absent herself from the theatre, and B in consequence resigned the contract with B is entitled to claim compensation for the damages which he sustained though non-performance of contract. ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो परफॉर्म करेंगे बी के थिएटर में, लेकिन अगर ए ने नहीं किया तो बी को लॉस हुआ, तो वो किससे क्लेम कर सकते हैं? ए से क्लेम कर सकते हैं, राइट। ये सर, तो मुझे एक चीज पूछना था, जैसे इसमें रेमेडीज में जैसे आपने बताया था, क्वांटम मेरिट का कॉन्सेप्ट के साथ समझाया था उसको। जब एक पर्सन रेंडर करता है दूसरे को अनदर, किसी सिचुएशन में, मतलब बिटवीन देम उनको पे करना होता है, ऑल्दो नो रेनुमरेशन फिक्स्ड होती है उसमें। तो लॉ कहता है कि प्रॉमिस टू, लॉ इन्फर करता है प्रॉमिस पे करने के लिए। तो उसमें मुझे वहां तक समझ में आया था, क्लेम की दो सिचुएशंस बताई थी। जब अवेलेबल हो, वो तभी अवेलेबल होता है जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, और क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। तो उसका ऑब्जेक्ट में डाउट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ अलाउइंग क्लेम। क्या है टू कंसेप्ट, पॉइंट वन क्या है? टू नाइन पेज बताओ मुझे, पेज नंबर। 2.129 सर। 1 to 9 में कौन सा पॉइंट बता रहे हो आप मुझे? क्वांटम मेरिट का क्वांटम सेकंड मेरिट पैरा। में कोई पर्टिकुलर पॉइंट है या जनरल कंसेप्ट है? ऑब्जेक्ट ऑफ अलाउइंग अ क्लेम, वहां से नहीं समझ में, ऑब्जेक्ट ऑफ अलाउइंग अ क्लेम। The object of allowing a claim on quantum marriage is to recompensate the party or person for the value of work which he has done. देखिए मतलब क्या है, इसे कॉम्पनसेट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पेंटर को बुलाया, आपका कोई पुराना घर पड़ा हुआ है, पेंटर बुलाया पेंट करने के लिए, और आपने 2 कमरे पेंट कराए, वो बाई चांस वो घर गिर गया, कोई पुराना घर था गिर गया, तो पेंटर को तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा ना, जितना काम किया उतने का देना पड़ेगा ना, उसकी क्या गलती है, राइट। तो जो मेन पर्पज है क्वांटम मेरिट का वो ये है कि जितना काम हो गया उतने का पेमेंट कर दिया जाए, राइट। तो उसमें मतलब एक पार्टी अबैंडन, मतलब मना कर देती है। अब आगे क्या लिखा है? आगे क्लेम्स डैमेजेस उनकी आर कॉम्पनसेटरी इन ए नेचर वाइल क्वांटम मेरिट इज restitutory. It is but reasonable compensation awarded on implication of a contract to remunerate, where a person order only 12 bottles of a whiskey from a wine merchant but also received 2 bottles of brandy, and the purchaser accept them. The purchaser must pay a reasonable price for the brandy. कहता उसने विस्की मंगाई और ब्रांडी आ गई, तो भैया तुम पेमेंट करो ना, उसका पेमेंट तो करो, जो आपने यस सर। ब्रांडी ली है उसका पेमेंट करो। ये है कॉन्सेप्ट कि भैया अगर आपने गलती से कोई चीज आ गई तो पेमेंट करना पड़ेगा ना आपने उसका। तो क्लेम में मुझे उसमें सिचुएशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होती है क्या क्वांटम मेरिट में? क्या होती है? सिचुएशन जो है, क्लेम होते हैं ना केसेस, उसके आपने बताए थे 6 केसेस बताए थे, तो उसमें हम्म। मुझे उसमें थर्ड फिफ्थ और सिक्स पॉइंट में पूछना था। थर्ड थर्ड पॉइंट में क्या मुझे है? ये देयर पूछ। वाज एन इम्प्लाइड एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बट देयर इज ए नो एग्रीमेंट एज टू रेम्यूनरेशन। एक मिनट। द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइज इन द फॉलोइंग केसेस। पहला पॉइंट क्या था? व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए तो जितना काम हो गया उतना पेमेंट करो। When something is done without any intention to do so gratuitously, जो हमने आज पढ़ा कि अगर आपको किसी का कोई मन नहीं था फ्री ऑफ कॉस्ट देने यस का, सर। तो जितना काम हो गया उतने का पेमेंट ले लो। When there is an express or implied contract to render service but there is no agreement to remuneration, आपने कॉन्ट्रैक्ट तो किया सर्विस का कि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कितना पेमेंट करेंगे वो डिसाइड नहीं हुआ और आप काम कर रहे हो, तो आप एक रीजनेबल कॉम्पनसेशन ले सकते हो। When one party abandons or refuses to perform the other, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक काम कर रहा है दूसरा मना कर रहा है, तो जितना काम हो गया उतने का पेमेंट ले सकता है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? देयर इज वेयर द कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, पार्ट है, हो सकता है, तो जितनी जो पार्टी डिफॉल्ट में नहीं है वो क्लेम ले सकती है। व्हेन एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट when an individual contract for a lump sum is completely performed,
इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा परफॉर्म हो गया है, बट बैडली, खराब खराब तरीके से परफॉर्म किया है, तो पार्टी कैन, जो उसको पेमेंट करना है वो उस खराब काम का पैसा रोक सकती है। भाई आपने कोई पेंट कराया, उसने गलत गंदा काम कर दिया, तो पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो नुकसान हुआ वो आप उससे क्लेम कर सकते हो। राइट। तो ये सर, तो मतलब जैसे एक्स ने गलत करा, अथॉरिटी एक्स रॉन्गफुली रिवॉक्ड अथॉरिटी बिफोर हम्म। वाई, वाई ने ड्यूटी कंप्लीट नहीं करी, वाई कुड कंप्लीट हिज ड्यूटी, जिससे हम्म। पहले वाई ड्यूटी कंप्लीट कर सके, वाई कुड रिकवर एज अ क्वांटम मेरिट फॉर द वर्क ही हैज डन, यस। और एक्सपेंसेस इंकर्ड इन कोर्स ऑफ ड्यूटीज एज एन एजेंट। तो ए ने अग्री करा डिलीवर 100 bales ऑफ कॉटन टू ए at a price of rupees 1000 per bale. The cotton bales were to be delivered in two installments of 50 each. A तो delivered 50 the पहुंच गए, first. लेकिन 50 आगे जा नहीं पा रही, तो जो 50 पहुंच गए उनका पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ कि ए ने डिलीवर करा द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बट वो वही फेल टू तो कह रहा सप्लाई। हूँ, लेकिन हाँ किसी ये रीजन सर। से वो सप्लाई नहीं कर पा रहा, बाकी 50, पहली 50 कर दी, बाकी 50 नहीं कर पा रहा है, कोई अनअवॉइडेबल रीजन है, तो वो क्लेम कर सकता है ना। हाँ, तो बस यही था उसमें हम्म। कंफ्यूजन। अब आज के में जो मैं पूछ रहा था, डॉक्ट्राइन ऑफ बेटा अब म्यूचुअलिटी, आज वो। की पूछना, आप कल, क्योंकि टाइम हो गया है ना। हाँ, अब आप बस नेक्स्ट एक क्लास में एक उठिए तो क्वेरी, पढ़ लीजिए। एक हाँ क्वेरी हाँ, रहेगी बस। बताइए। बस एक, मैं खुद ही वाइंड अप कर रहा हूँ सर, क्योंकि कल एग्जाम है। मैं खुद ही वाइंड अप कर रहा हूँ 2 मिनट में। पूछिए। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेरिंग कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस बिटवीन में मैं पूछ रहा हूँ मैं। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस में स्टडी मटेरियल से मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। पूछिए ना, पॉइंट तो बताइए। पॉइंट नंबर बता रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5। हाँ, इसमें मुझे सिक्स्थ फिफ्थ पॉइंट और सेकंड पॉइंट और। इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। यस सर। In contingent contract, contracting parties have interest in the subject matter in contingent contract, but contracting party in case of wagering have no interest in the subject matter. कहता कि जो मेन सब्जेक्ट मैटर है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या था, अम्ब्रेला को बेचने का, बारिश होती है तो उनका बारिश में एक इंटरेस्ट है, लेकिन हम्म। वेजरिंग क्या होता है, सट्टेबाजी, तो उन्हें इवेंट से कोई मतलब नहीं, उन्हें पैसों से मतलब है कि भैया मेरे ये काम हो जाए तो पैसे मिल जाए मुझे। और सेवन पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेवन पॉइंट, ये यही लास्ट 3 पॉइंट्स, फिफ्थ सिक्स्थ एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवन। म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन। म्यूचुअलिटी मतलब आपसी। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी लॉस और गेन। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि एक को लॉस हो तो दूसरे को प्रॉफिट हो, या एक को प्रॉफिट दूसरे को लॉस हो, जबकि वैचरिंग में क्या होता है, अगर एक को लॉस होगा तो दूसरे को प्रॉफिट होगा। लास्ट वन, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, वैचरिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। तो राइट। मेनली इसमें, ये सर, मेनली इसमें सिचुएशन ये होती है कि जैसे डॉक्टर म्यूचुअल लॉसन के वैगरिंग अग्रीमेंट में जब हमने पढ़ा था यूनिट, उसमें गेम ऑफ चांस, चिट फंड, वो सब वगैरह कमर्शियल ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट थे। सब सब सब। हाँ, लेकिन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्टर म्यूचुअलिटी और लॉस एंड गेन है। लेकिन मेन इसमें मेरा कंफ्यूजन ये था, जब मैंने डिफरेंस पढ़े थे, तो हम्म। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में जैसे उसमें भी हैपनिंग नॉन हैपनिंग था, पहले कंफ्यूज हो गया था, फिर इसमें भी हैपनिंग नॉन। लेकिन वहां पर हैपनिंग नॉन हैपनिंग मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि भाई साहब, आप ये अगर इवेंट होगी तो मैं पैसे दूंगा, नहीं होगी तो आप दोगे, जबकि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इवेंट पे बेस होता है, कि अगर बारिश हो गई तो मैं छाते बेचूंगा, नहीं हुई तो नहीं बेचूंगा। राइट। मतलब अगर ए ने जैसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा घर खरीदने के हम्म। लिए, और हम्म। अगर वो एबल टू सिक्योर बैंक लोन सिक्योर कर सका, तो वो कंटीजेंट है। मतलब उसने उसके साथ वो करा था, पहले कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ। दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। जो मेरा कंफ्यूजन था, तो मैं दो एग्जांपल्स बोल रहा हूँ इसके। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 1 लाख, बीस हाउस इज बर्न, ये कंटीजेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और है, ए मेक्स कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाई हिज हाउस फॉर रुपीज 50 लाख। अगर हम्म। वो सिक्योर कर सकता है बैंक लोन के लिए, तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या? नहीं, कंडीशनल हुआ, कंटीजेंट नहीं। और वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में वो होगा, मतलब किसी के साथ, मतलब इवेंट होने पर उसके पेमेंट ट्रांसफर होगा, इवेंट हो गई तो पेमेंट, नहीं हुई तो आप मुझे दोगे। और उसमें कुछ इवेंट होती है तो मैं आपको दूंगा, भी नहीं होती है तो वो आप मुझे दोगे। रिवर्स उसमें वन। कुछ उसमें कुछ वो क्या कहते हैं, कंपनसेशन का कुछ नहीं है वैगरिंग। वैगरिंग में कॉम्पनसेशन तो मिल रहा है। ये मेन कंसिडरेशन क्या है ना, कि अगर बारिश हो गई तो आप मुझे पैसे दोगे, नहीं हुई तो मैं आपको पैसे दूंगा।
वैगरिंग में तो वो है जैसे क्या कहते हैं, प्रॉमिस होता है, कुछ प्रॉमिस मनी के लिए। बेटे प्रॉमिस केवल मनी ट्रांसफर के लिए होता है, जबकि कंटिजेंट में ट्रांजेक्शन के लिए होता है, राइट। जैसे जैसे ए ने अग्री करा बी को 50,000 टू बी इफ इट रेन्स एंड प्रॉमिस टू पे लाइक अमाउंट ऑफ ए if it does not rain, the agreement will be via wagger. But if one of the parties have control over the event, the agreement is कंट्रोल not वेजरिंग में कंट्रोल नहीं होता ना बेटे, अगर कंट्रोल होगा तो फिर वेजरिंग थोड़ी कहलाएगा। इवेंट ऐसी होनी चाहिए जिसपे कंट्रोल ना हो। उनका कोई मतलब कॉमन इंटेंशन टाइमिंग के लिए होता है सच एग्रीमेंट के लिए वैगरिंग। वेजरिंग में देखिए, अगर कॉमन इंटेंशन है तो वो कंटिजेंट कहलाएगा, वेजरिंग में कॉमन इंटेंशन नहीं होती, दोनों की इंटेंशन डिफरेंट होती ओके सर, आपने जो मुझे कहा था करने के लिए वो मैंने भेजा था मैम को, लेकिन मैम ने नहीं देखा, तो ये है। मैंने मैंने बेटा देखा है आज आप मैम ने कितनी पाई होंगी। हाँ, और मैंने जो भेजा है क्वेश्चन, ये मैम को 2 बार भेजा था, आप इसको देख लेना। ठीक है, अनएनफोर्सेबल का फर्स्ट चैप्टर का है। ठीक है बेटा, मैं देखूँ। थैंक यू ठीक है। सर, असाइनमेंट कंप्लीटेड सर, ऑल 6 यूनिट्स, ऑल क्वेरीज अंडरस्टूड सर, ओके थैंक यू ओके। सर। सर क्लास इज ओवर नाउ। क्लास ओवर हो गई सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।